booked for your IELTS examination. And now the question appears that what are documents I will be needing for a study abroad journey? Don't worry, I'm here to help you out. I've got you covered and let's get started. So let's talk about the documents that we will be needing for our entire journey. So first of all, let's move ahead and let's talk about what all things we are going to study in this session. By the end of this session, you will learn essential documents required for university application, country-specific requirement which is UK, US, Canada and many more, tips to prepare and organize your file, common document mistakes to avoid. So there are a lot of mistakes that you need to avoid जब भी आप अपनी abroad journey को start कर रहे हो. This is not only very crucial step, but trust me, एक भी गलती is gonna lead to a really bad visa rejection. And once you have that increased visa rejection, it's going to be very difficult for you to cater to that. Okay? Now, let's move ahead and let's talk about it. Why documentation matters? Now, the fact of the question is, why does it matter? What exactly the thing that's bothering us so much, जिसके वजह से हमें बहुत सारे visa rejections face करने पड़ते हैं, encounter करने पड़ते हैं, and what's the solution to that? It basically works as the first impression for your university or officer. Documentation is the very first impression that plays to your particular organization, university, or for whatever purpose you guys are going. Okay? It reflects your academic and personal credibility, how credible you are, how trustworthy, how genuine you are. Okay? It determines the eligibility for admission and scholarship. It determines the eligibility and admissions and scholarship. Missing or incorrect document, delete or rejection application. See, documents are a kind of your, it gives a kind of credibility of yours. It tells how trustworthy you are, how much a person or an organization can trust you based on your information. Okay, if your documents are on time, if your documents are complete, if your documents are fulfilling, satisfying, then it means you are a really nice person, and it not only tells what kind of person you are, it also tells how disciplined you are, how interested you are to work with that university, to work with that organization, right? The next thing that it carries is categories of documents that you might need. क्या चाहिए होगा? Academic document, of course, your 10th ka, 12th ka result and everything depends on for which you are going. Identity documents, so exam में, IELTS के exam में तो हमारे पास passport चलता है, but passport के अलावा you need your country का identification, like Aadhaar card, PAN card, you might be having that voter ID card, or a driving license might work for that, right? Language proficiency proof. Now, language proficiency proof, it can be IELTS, it can be TOEFL, it can be any other English proficiency examination, whatever the demand of the university is and whatever you guys are planning to appear for. Okay. The next thing is financial documents. So, if you know that there are many countries जो finances को लेकर बहुत ज़्यादा particular रहते हैं, ठीक है, finances को लेकर बहुत ज़्यादा conscious रहते हैं कि आपके finances बहुत मेंटेन्ड होने चाहिए, बहुत ही सही तरीके से मेंटेन्ड होने चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो एक सिक्योर्ड अमाउंट भी रखते हैं, काइंड ऑफ एडवांस भी रखते हैं, आपके खर्चे, आपके डेली सर्वाइवल के लिए आपके जो पैसे होते हैं, इमरजेंसी के लिए भी पैसे रखते हैं. सो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू मेंटेन इट. एंड ऑफ कोर्स, लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट accusing anyone, but there are chances जहाँ पे वो ये चेक करते हैं whether or not whatever the finances you have you paid tax on that finances or not. So yes, they do check whether whatever the money is going to go for the another country, whether that is a legal money or not. So there are a lot of things that that the government verifies, or the visa officer verifies, or you can say the organization of the university verifies before you step into the exact process.
Supporting documents, that is essays, SOP and LORs, which in turns tell about you, what is your purpose, what's your end motive. Okay, now visa and travel documents, of course, that goes without saying. So these are some of the categories of the documents that you need. Now let's talk about one by one of them. ठीक है, academic documents की बात करें तो these prove your educational background. So basically it might caters to 10th and 12th mark sheet, bachelor's degree के transcripts, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, बैकलॉग की समरी है इफ यू हैव दैट, ऑफिशियल ट्रांसलेशन फॉर नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, अगर आपके पास जैसे यूजुअली ना हमारा जो एड्रेस प्रूफ होता है या जो हमारा वो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, दे माइट नीडेड, तो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट यूजुअली हिंदी में प्रिंट होते हैं. ठीक है, या एड्रेस प्रूफ कभी कभी हमारे पास हिंदी में प्रिंटेड होते हैं, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिंट करके आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर द रेफरेंस. यस, दिस हैपेंस. ठीक है, स्कैन इन कलर एंड सेव एज अ सिंगल पीडीएफ पर डिग्री. सो कोशिश करो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनकी जो प्रिंट होगी, उनकी प्रिंट कलर्ड होनी चाहिए और थोड़े क्लियर होने चाहिए. देखो यूजुअली जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, थोड़े ब्लरिश होते हैं. मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग दैट सारे के सारे ही ब्लर होते हैं, बट कुछ होते हैं ऐसे ब्लर. कोशिश करो उनको क्लेरिफाई करा के आओ. ठीक है, उनके जो टेक्स्ट होते हैं उनको थोड़े डार्क रखो, थोड़े विजिबल रखो, ताकि वो it shows how you maintain your document, that shows something about yourself as well. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में. तो इट इज इसेंशियल फॉर वेरिफिकेशन एंड इंटरनेशनल रिकॉर्ड, जैसे पासपोर्ट एज आई टोल्ड यू होता है. ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, नेशनल आईडी जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट. ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कीप बोथ डिजिटल एंड हार्ड कॉपीज रेडी, दोनों हमेशा रखा करो. एक कोशिश क्या करो कि कैरी अ पोर्टेबल वन, सो दैट यू नो इट विल बी इजियर फॉर यू टू at the time of visiting the airport or anyone you might need, anywhere you might need to have the concise format as well, that the laminated one that comes, right? You can also keep that as well. Chalo, let's talk about the next thing is English language proficiency. Prove your ability to study in English speaking in English speaking countries. IELTS, TOEFL, PT, Duolingo score report, minimum band score requirement, Canada, UK IELTS 6.5 overall जो भी है आपका. USA का TOEFL का score है 80 to 100 IBT. Australia का IELTS का score is 6.0. Always send your TRF, which is test report form, directly to the official portal ऑफ आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल. सो बेसिकली कोशिश करो कि आपका जो टीआरएफ है, जो आपका जो स्कोर कार्ड है, टीआरएफ इज बेसिकली स्कोर कार्ड, वो आप ऑफिशियल पोर्टल से भेजो तो वो ज्यादा रिलायबल होता है. बिकॉज रिलायबिलिटी एंड जेन्युइनिटी इज ऑल्सो समथिंग दैट दे माइट क्वेश्चन यू अपॉन. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं. अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की. तो यू प्रूव यू कैन फंड योर स्टडीज एंड लिविंग एक्सपेंसेस. सो it's not that you short on money. So it means that you have a good amount of finances available. Bank statement 3 to 6 months के, affidavit for support, income tax return अगर आपने फाइल करी है, लोन अप्रूवल लेटर अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है, स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप प्रूफ अगर आपकी स्टडी कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसका प्रूफ. ठीक है, मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस एज पर कंट्रीज रिक्वायरमेंट. अब ये जो रिक्वायरमेंट है, इट माइट चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्री. लाइक जर्मनी की अलग होती है, ठीक है, कनाडा की अलग होती है, अमेरिका यूके की अलग होती है. ठीक है, सो ये डिपेंड करता है फॉर विच कंट्री यू गाइज आर गोइंग फॉर. उस कंट्री के हिसाब से दे हैव टू यू हैव टू मेंटेन द balance for that. What is statement of purpose? देखो, statement of purpose is basically you are telling about yourself. तो वो आपका एक पूरा आ जाता है. ठीक है, so it explains who you are, why you chose this course, university. Clear and concise होना चाहिए. Plagiarism नहीं होना चाहिए. It shouldn't be copied. It shouldn't be AI based. It should be humanized, customized for university. Start with story motivation that connects you to chosen field. There are many multiple things that you need to consider when you're going for SOP of yours. Endorsement from your teachers, employers, usually 2 to 3 LORs are required. Should highlight your skills, attitude, or potential. Must be official letterhead and signed.
choose recommenders who you know well actually, and academically and professionally as well. So it is going to help you, push you towards your desired country. Resume CV कैसा होना चाहिए? Shows your academic and professional background, education, work experience. Keep it on page, UG for 2 pages for PG. Use professional format, Europass, Canva template, some of the examples. Tailor to match your courses and university requirement. तो कोशिश करो आपकी CV वैसी हो जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जो आपके वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। सो यस, वीजा डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? ऑफर लेटर, कंफर्मेशन लेटर ऑफ एनरोलमेंट, passport, visa application form, financial proof, medical test report for certain countries, visa interviews, appointment confirmation, apply for visa at least 2 to 3 months before intake. इसीलिए बोला जाता है that it is very important for your visa application, it is important to take your examination, proficiency examination, so that you don't face any problem in your visa thing, ठीक है। That's the reason. Application आप पहले करोगे, then only you will be able to clear it. Also, clarity तो क्या ही है कि आपके documentations अच्छे होने चाहिए, then only you will get the clearance. Otherwise, there are high chances for visa rejection. Even a single number यहाँ से वहाँ हो गया ना, तो you will be under the doubt of the visa officer. So yes, it does hampers, ठीक है। Additional country specific documents जैसे USA को service free receipt, GS 160 और I-20 फॉर्म चाहिए होता है, कनाडा को GIS सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA चाहिए होता है, यूके को CS लेटर, TB टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होता है, ऑस्ट्रेलिया को COE ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर चाहिए होता है। ऑलवेज वेरीफाई विद योर कंट्रीज एम्बेसी और ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा। These are some of the additional country specific documents that you might need. Or now let's talk about how to organize your documents. Now that you have all these documents ready with you, let's talk about the organization, ठीक है। Create a digital folder. So study abroad underscore your name underscore 2025. Subfolders, academic, identity, financial, SOP, LOR, CV, visa. Keep both scan and printed copies. Use Google Drive or OneDrive for easy sharing with university or agent. Now this is going to be your entire one folder, which will be easier for you to share it to the organization, right? Chalo. Now, the next thing is common mistakes that you might need to avoid, and those are submitting incomplete transcript, use outdated bank statement, copy pasting SOP from the internet, wrong photo documentation for visa, missing deadlines, always cross-check universities and embassies document list. Okay? These are some of the common mistakes that you need to avoid at the time of preparing your documentation, right? Chalo, pro tip for 2025 applicants: start preparing for documents 6 to 8 months before intake. Verify all documents, keep extra copies, stay updated with changing visa policy so that you need to revise your documents in case if required you can do that, right? And that's all. Thank you so much everyone. Thank you so much for being here, and I hope this is going to help you, and let me know if you need any further video for any further topic. Thank you so much. We'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.